Hi viewers, you're watching House Highlights on Sunset Television with me, Rashika. As the first part of the budget session ends today, we get you all the detailed updates of both houses of the parliament. But first, a look at the headlines of the day. First part of the budget session concludes in Parliament, both houses to meet on March 13th. Rajya Sabha proceedings adjourned amid continuous protest by opposition leaders. Ruling party demands apology from opposition leaders for obstructing functioning of parliament. And chairman expunges parts of leader of opposition Mallikarjun Kharge's speech. Opposition members insist on a joint parliamentary committee probe, revoking the suspension of Congress MP Rajni Ashok Rao Patil. Soon after the Rajya Sabha took up listed business on Monday morning, Chairman Jagdeep Dhankar disallowed notices submitted under Rule 267 that were identical in content. Honorable members, I have received two notices under Rule 267 from Shri Sanjay Singh and Shri Santosh Kumar P. Honorable members, I would be seeking your guidance. 7 notices that have been given so far by Shri Sanjay Singh are identical. There is no variation in content at all. If there has been a direction issued by me on the first notice, you will appreciate in the remaining 6 that are identical of the first are defiance of the direction. I am sure the House will not approve that we create such kind of a situation that even after there is a direction by the chairman and on the same language, ditto, without any variation, we have these many notices. One second, take your seat. Let me conclude first. Let me conclude. Mr. Sanjay Singh, let me conclude. Please, take your seat. Let me conclude. The reasoning that you give us same identical notice, I take a view on it. I communicate my view to the House. And this happens every day. 7 such notices. You only change the date. It's okay. Both these notices are not in order. The notices are declined. Opposition MPs insisted that the chair allow leader of opposition and Congress President Mallikarjun Kharge to speak. Calling upon opposition member Jairam Ramesh, Chairman Dhankar requested members to allow the House to function. Honorable members, while I will give floor to everyone as I gave yesterday also, my greatest problem is that when on issue I give the floor, it goes on a tangent. Honorable Leader of the Opposition wanted to speak on an aspect of expunging of observations. One second. And given the status of the LOP, I permitted him to hold the floor. He held the floor and he started reading out the portions I had expunged. Now I am before you all. If the platform of this House is to be used contrary to rules, please, I expect everyone in the House to help me run the House. If you feel I am saying something which
Mr. Jairam Ramesh, these snipe shots are not to be permitted. By body language and otherwise, I find every time you jump on your feet, no. Mr. Jairam Ramesh, number one, you are a senior man. Number two, you have high credentials. One second. You have held important positions in government. I don't expect you to rise every time. No. आज के दिन भारत की जनता चाहती है कि राज्यसभा की कार्यवाही सही तरीके से चले। जनता चाहती है कि हम डिबेट करें। टेक योर सीट। टेक योर सीट। माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्यगण स्थान ग्रहण कीजिए। और मैं समझता हूं कि हर सदस्य यहां अपनी बात कहना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में मेरी बात सुनना लाजमी है, मेरा कर्तव्य भी है। पूरा देश हमसे उम्मीद रखता है। देश हमसे उम्मीद रखता है कि राज्यसभा में डिबेट हो, डिस्कशन हो, डायलॉग हो, डेलिब्रेशन हो और हम संविधान निर्माताओं की आत्मा और संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात करना हमारा आचरण नहीं हो सकता। आज के दिन क्या हम ऐसा आचरण बाहर देना चाहते हैं कि सदन में हम कुछ भी करेंगे पर सार्थक चर्चा नहीं करेंगे, सीमित व्यवहार नहीं करेंगे? I appeal to the members, permit me to take up the listed business. 0 hour was taken up for a short while amid noisy scenes, after which Chairman Dhankar permitted Kharge to speak. During Kharge's speech, several Treasury bench members raised slogans. Chairman Dhankar also expressed objection to Kharge's remarks that were expunged by the chair. Leader of the opposition, I request you, you took the floor and you have indicated in so many words that the chair is acting under the pressure. These are expunged. No. You are forfeiting your right to hold the floor. This can't be done. No, sorry. Nothing will go on record. Every time you make an allegation, chair is acting under pressure. How can that be countenanced? You make it outside, you make it inside the house. Even as 0 hour continued, opposition MPs kept insisting on a joint parliamentary committee probe into the allegation against the Adani Group and revoking the suspension of Congress MP Rajni Patil. Leader of the House, Piyush Goyal, requested the chair to bring the House in order. Chairman Dhankar warned the opposition MPs for misconduct and entering the well of the House. Amid sloganeering, the House was adjourned till 11:50 a.m. I suggest that if this is going to be the behavior which is shown to the rest of the country and the world, it is truly an insult of the House, and they are repeatedly disrupting. I don't know whether we will have to name the members and take appropriate action against them. But considering that mood is very agitated, may I suggest that you adjourn the House for some time and talk to the leaders whether they are interested in running the House. After Rajya Sabha reconvened, the chairman requested members to allow the House to function, but the opposition members reiterated the demand for the JPC probe. They also requested the chair to revoke the suspension of Congress member Rajni Patil. Leader of the House responded to this, demanding an apology first by the opposition for their behavior during Prime Minister Modi's speech on the motion of thanks on the President's address. तो मेरा एक विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि एक महिला सदस्य, भद्र महिला, बहुत अच्छी महिला है सब,
उन्होंने आप निलंबन हो गया तो पुनर्विचार का अधिकार आपको है। और सुनिए, आपको तो अधिकार है कि आप नेता सदन को बाहर निकाल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं सर, आपका असीमित अधिकार। तो विनम्रता पूर्वक कि विचार कर लें। और दूसरा सर, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट होने से आप ही बचा सकते हो, जेपीसी कोई दूसरा नहीं बचा सकता। आप में ही ताकत है बचाने की। आप एक बार जेपीसी कर दीजिए सर, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सर, इसी रूल के नीचे ये भी लिखा हुआ है कि सिर्फ काउंसिल, पूरा काउंसिल ही अगर चाहे 256(2) में ओनली द काउंसिल ऑन अ मोशन बीइंग मेड कैन रिजॉल्व दैट सच सस्पेंशन बी टर्मिनेटेड। तो मुझे लगता है चेयर के ऊपर किसी प्रकार का भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। मेरे ख्याल से आप भी बचा सकते हैं अगर आप माफी मांगे जो आपका अभद्र व्यवहार रहा है, जिस प्रकार से पूरे विपक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को होने नहीं दिया, जो आप सबका व्यवहार पूरे देश ने टेलीविजन पे देखा, दुनिया ने देखा कि विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता जिनके ऊपर पूरे विश्व की आशाएं अपेक्षाएं टिकी हुई हैं, जिनको पूरा विश्व आज मानता है कि सबसे लोकप्रिय नेता 8 वर्ष तक लगातार पूरे विश्व में अगर कोई रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और जिस प्रकार से आपने अभद्र व्यवहार किया, जिस प्रकार से उनको तकलीफ दी और उनको लगभग 1.25 घंटे तक यहाँ पे आपका जो व्यवहार रहा वेल में रहकर, उसकी माफी मांगिए, उसके लिए आप पश्चाताप करिए। उस पश्चाताप के बाद फिर आप मोशन लेके आइए। Expressing his views on the budget session, Chairman Dhankar repeatedly requested the members to maintain decorum and allow question hour to continue. The House, I am constrained on account of persistent disruption, and I would go to the extent of saying deliberate disruption. In spite of my pleadings, obstruction is being created. And that is not the way to run the House. We have lost precious time already. We should have been. So, insert the guardian day in and day out. Is that the approach? Sorry. Honorable members, I am pleading with you for the last time. If the House will be subjected to such kind of disturbance, disruption, violation of rules, I will be constrained to act as per expectation of the people. They do not want us to be in disorderly situation. They do not want us to continue this. The House stands adjourned to meet on Monday, 13th of March 2023 at 1100 hours. Time for a short break in the bulletin. On the other side, news about the proceedings of the lower house.
Welcome back to House Highlights. Let us now take a look at some key moments in the Lok Sabha. Lok Sabha reconvened with question hour on the last day of the first part of the budget session. TMC MP Saugat Ray inquired about the cash relief policy for unorganized sector workers. In reply, Minister of Labour and Employment Bhupendra Yadav listed the government's policies for daily wage workers. The only way to help the daily wages who include the migrant labor is to give them some cash dole so that they have some money in their pockets and that money rolls in the economy. Will the Honourable Minister for Labour and Employment be pleased to state whether the government has any plan to give cash relief to daily wages? जहाँ तक उनकी लाइफ और डिसेबिलिटी के संबंध में है, सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दी जाती है, जहाँ उनकी एक्सीडेंट और मृत्यु के बारे में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दी जाती है। जो छोटे कामगार हैं उनके लिए देश में स्वास्थ्य के अंतर्गत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना चलाई जाती है। उसके साथ ही साथ उनके जो भविष्य की सामाजिक सुरक्षा का विषय है उसके लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त भी पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड और जिन ग्रामीण क्षेत्र में जिन वर्करों को रोजगार उपलब्ध नहीं होता है उनके लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम और सरकार की अन्य चलने वाली योजनाएं जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये सब योजनाएं उन सब श्रमिक वर्गों के लिए ही सरकार के द्वारा चलाई जाती है। Responding to DMK MP A. Raja's query on GST compensation and AG certified statements, Finance Minister Nirmala Sitharaman replied that the GST Council and not the centre decides the GST compensation. She added that some states are yet to provide Accountant General or AG authenticated certificates due to which funds have not been released. The extension of it beyond 22 June is simply restricted to the payment of loan which has been taken for servicing the compensation and also for the loan itself and for the interest. So there's nothing contemplated beyond it, and that's a decision of the council, not of the central government. Now, secondly, AG's certification is by law between the centre and state an agreed process where unless that authentication from the AG is given, and if there is any delay in that process between the state and the AG, of course, it goes without saying that it is between the state and the AG that the matter has to be sorted out. If between them there is a problem and therefore the AG certificate gets delayed in reaching the central government, I would put it matter of fact that the delay is not at my end. Members took up matters of urgent public importance in the Lok Sabha. BJP MP Kuwar Pushpendra Singh Chandel referred to the demand for a separate Bundelkhand state. RSP MP N.K. Premchandran highlighted the Supreme Court's verdict calling for higher pensions under the EPFO scheme. BJP MP Rajdeep Ray raised the issue of the slow pace of construction work of the Sainik School in Silchar. अनेकों प्रकार की डिमांड रहती है लेकिन पूरे देश और प्रदेश के साथ में मिला करके नहीं हो पाती हैं। तो मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि बुंदेलखंड को अलग प्रांत बनाने के लिए भी पूरी उसमें व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि जो भारत सरकार की जो मंशा है श्रद्धेय मोदी जी की और योगी जी की, उस आधार पर पूरे बुंदेलखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और वहाँ की रोजगार के लिए, वहाँ के पर्यटन के लिए, वहाँ की संस्कृति के लिए और धार्मिक क्षेत्र के लिए उसको बढ़ावा मिल सके। सर, द Honorable Supreme Court has pronounced the judgment on 4th November 2022 regarding higher pension for the Employees Provident Fund Pension Scheme members. But it is quite unfortunate to note that subsequent to the judgment pronounced by the Honorable Supreme Court, the Government of India, especially the Employees Provident Fund Organization, is not acting in accordance with the terms and conditions of the judgment. It is important to mention that state government has allotted 150 bighas of land in my constituency, Silchar,
for construction of Sainik School, but the progress is unsatisfactory in the last 1 year. We were under the impression that the courses would have started in 2022, but it was not to be. I shall be thankful if you kindly ask the appropriate ministry to expedite the construction of Sainik School allotted to Silchar, Lok Sabha. Among other issues, during the 0 hour, AITC member Mahua Moitra asked the Home Ministry to release border area development funds due to her constituency. While BJP member Sushil Kumar Singh raised concern related to the Pradhan Mantri Awas Yojana, BJD's Bhartari Mehtab urged the government to exempt the handloom industry from GST. My Lok Sabha area, Krishnanagar, has 8 blocks in total. 4 blocks, Krishnanagar 1, Tehatta 1, Karimpur 2 and Chapra fall under the border with Bangladesh. The union government through its BADP program used to give us substantial funds for development. However, for the past 3 years, these funds have not been coming and we have just got the sanction for the 2021 financial year, sir. This is causing huge problems in the area, especially in these backward border districts. I would urge via you to the Ministry of Home Affairs to please expedite the process of releasing funds and to give us the action plan for that year within that financial year. देश में बेघरों को घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, लेकिन इसमें 2 समस्या है महोदय। नंबर 1, मेरे संसदीय क्षेत्र के गया या औरंगाबाद जिले या और भी जिले होंगे राज्य या देश में, जहां लाभुकों का नाम ऑटो रिजेक्ट में चला गया है, जिससे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, उन गरीबों का घर नहीं बन पा रहा। नंबर 2, इस योजना में एक समस्या और है कि बहुतेरे ऐसे हजारों लाखों ऐसे जेन्युइन बेनिफिशरीज हैं जिनका नाम सर्वे के दौरान किसी न किसी कारणवश छूट गया, चाहे वो सर्वे एजेंसी की गलती से हुआ हो या कोई और कारण हो। Therefore, I urge upon the government to exempt the handloom sector from the goods and services tax because it is raising cost of the products of this industry, having an adverse impact on all those that depend on it for their livelihood, as well as place barriers on the expansion of the industry. The lower house also took up private members' business on Monday. The House further discussed a resolution relating to the beautification and modernization of railway stations under the Adarsh Station scheme. 2014 से पहले और 2014 के बाद की स्थिति दिन रात का फर्क है। देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेलवे की पटरियों का दोहरीकरण हुआ, विद्युतीकरण हुआ, यात्री सुविधाएं और विस्तार सुरक्षा योजना का काम तेजी से हुआ है। और मैं समझता हूं कि जितना काम आज़ादी के बाद से लेकर 2014 तक हुआ, पिछले 9 साल के अंदर इस रेलवे का नवीनीकरण अगर किसी ने किया है तो इसके अंदर की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने किया है। So lower middle class, we need existing trains that were there before the COVID to be restarted, sir. And I urge upon the ministry to restart those trains, sir, and also urge upon the ministry to start this, whatever they promised in AP Reorganization Act with respect to the South Coast Railway Zone as soon as possible, as well as Railway Recruitment Board to be established in Vizag. पश्चिम बंगाल को रिकॉर्ड एलोकेशन इस बार के बजट में 12,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इतना ही नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट से भी आता हूं, मणिपुर में पैदा हुआ, इसलिए ये भी कहना चाहूँगा एनएफ रेलवे को जो है सबसे अधिक 11,000 करोड़ का जो है एलोकेशन मिला है। पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं और दार्जिलिंग की खूबसूरती ये है सर, एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान, एक तरफ बांग्लादेश और जो है 50 किलोमीटर की दूरी पे चाइना है। बॉर्डर इलाके के लिए, वहां तक ट्रेन जाने के लिए और बॉर्डर इलाके के डेवलपमेंट के लिए, रेलवे लाइन के लिए 1,20,000 करोड़ का जो है बजट रखा है, उसके लिए भी मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं। सेंट्रल रेलवे जो मुंबई में है उसमें 5 डिवीजन है, नॉर्दर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में 5 डिवीजन है और सदर्न रेलवे जो चेन्नई में 6 डिवीजन है। अब जो वॉल्टेर के साथ अगर ये साउथ कोस्ट रेलवे जोन बनेगा, गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा, तो 4 ही डिवीजन बनेंगे। ऐसे बहुत सारे जोन है जो 4 में चल रहे हैं सर, और ये काफी प्रॉफिटेबल डिवीजन है। तो बार बार मैं इसलिए दोहराना चाहता हूं सर, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये
ये विरासत, ये इतिहास, ये पूरा आंध्रा के, स्पेशली जो उत्तर आंध्रा के लोग हैं उनसे मिला हुआ है सर। तो जरूर इसको खत्म ना करें, इसको बिल्कुल आगे बढ़ाए। ये वॉल्टेयर डिवीजन की मांग फिर से मैं इसके प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन के जरिए मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं सर। With the conclusion of the first part of the budget session on Monday, both houses of parliament will now meet at 11 a.m. on 13th March. सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 13 मार्च 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। That's all for the day. We shall bring you house highlights after a month for the second part of the budget session. Till then, keep watching Sansad TV for all parliament updates. Good night.